चली गई थी। आमतौर पर थर्डमैन और फाइन लेग लिया जाता है। शुरुआत के 2 ओवर्स में देखा कि थर्डमैन तो है लेकिन स्क्वायर लेग लिया गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लिया गया था और इसीलिए ये एक तासीर रही है। पूरे विश्व कप में हमने ये देखा है कि पिचों में शुरुआत में उतनी रफ्तार नहीं। When you have 2 slips in place, you've got to bowl it outside the off stump. Otherwise, there's no point really. इस बीच अगली गेंद और बल्ला घुमाया, ऑफ स्टंप की बाहर की, उस गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है ऑफ साइड में। थर्डमैन थोड़ा सा स्क्वायरिश अपनी रास्ता तय करके जाना पड़ा उस गेंद को उठाने के लिए बाउंड्री लाइन के करीब में, लेकिन बॉलिंग बहुत बढ़िया हो रही है इस समय जो फील्ड के मुताबिक हो रही है, लेकिन उसका जवाब टू डाल तो मैं पात रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जहां आमतौर पर 1 रन है वहां 2 रन दौड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और दबाव बना रहे हैं बॉलिंग टीम के ऊपर। Yes, and that's where you've got to do it in an ODI or even in T20. But that margin is a very fine margin. When I said about the off stump, if you pull just slightly wide, David Warner will do exactly what he did, slash it down to point. गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, लेकिन इस बार ये जो गेंद थी उसको अच्छी कलाबाजी करते हुए बेरस्टो जो फील्ड कर रहे हैं कवर पॉइंट क्षेत्र में दायरे के अंदर, उन्होंने उसको फील्ड किया। अच्छा मजबूत क्रिकेट देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक दमखम के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ आई है और इंग्लैंड जिसको खोने को कुछ भी नहीं। ये स्मरण रहे कि ये दोनों टीमें सबसे कम मैच खेली हैं अब तक टूर्नामेंट में। दोनों ने केवल 6 खेले हैं, बाकी सभी टीम खेल ली हैं। Yes, well, Australia, they started off very poorly in the tournament and people were wondering what happened to them, but they were able to recover and win on the trot, 4 on the trot. But here goes England trying to, I think, save some self-respect in this game. That's why you can see them slightly more up again. They don't want to lose, especially to Australia, the old enemy, beating them for 146 years, the oldest rivalry. And this is a mini Ashes happening here right now in Ahmedabad. And after this over, we'll take you back to Bengaluru for the close of the New Zealand-Pakistan game. And this one slightly slower from David Willey, and the ball is just played away with an open bat down to third man, pick up a single. 27 for 1 then in 4.1 overs. So even though they've lost Travis Head early, is still going at a clip of well over 6 runs and over, and that's what Australia is all about. You can see beneath that their entire game plan is to give their openers as much head as they want. Just give them their head and say go for the runs, because they've got a very, very good batting lineup all the way down to Stoinis. Even Pat Cummins, I remember, against New Zealand, just break off for a moment. Here goes Willey. And this one much better. Levy squares up slightly, but plays it on the onside for Willey to pick up. Even in Dharamshala against New Zealand, he scored, I think, 37 of 17 deliveries or something, and took the game away from New Zealand. So we got batting all the way down, and that's why they gave their openers all the head that they want. Almost playing down the wrong line. वहाँ पर वार्नर जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं और अटैकिंग शैली उनकी रही है, ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, बीच बीच में पिच की उछाल और रफ्तार को समझ नहीं पा रहे हैं. Here goes Willey, and this one gets him, cuts him in half. And there's an appeal from Butler, there's an appeal from Willey, an appeal from everyone, but half-hearted. Maria Erasmus, who is the umpire at the bowling end, says not out. It must be very, very close. And have they taken the review? They're having a chat, Butler and the rest of his team. And yes, they are. Still 1 second remaining. I think it's such an important wicket, Vineet. And they said, let's see, if we had inside edge. Because sometimes for the umpire to guess that it's got, it is very, very difficult. There's bat, there's pad, there's glove, so many things happening. So why don't you take your review? राशिद, मोइन अली, विली, सभी वरिष्ठ खिलाड़ी इकट्ठे हुए और बिल्कुल अंतिम लम्हे में वो रेफरल ले ही तो लिया. और वार्नर जिस तरह से खेल रहे थे, लेफ्ट हैंडर हैं, और इस स्क्रैम्बल्ड सीम से जब उन्होंने गेंद की थी और जाके नी रोल से थोड़ा ऊपर लगी थी, तो हाइट का भी मामला हो सकता है. और क्या लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी. ये वास्तव में बड़ा टाइट डिसीजन होने वाला है. अंपायर दर फ्रेम उसको देखना चाहेंगे. पहले देखेंगे कि नो बॉल है अथवा नहीं है. उछाल का मामला भी हो सकता है. और पिछली गेंद पे भी लगा था कि इस पिच पे से उछाल और रफ्तार को समझ नहीं पा रहे हैं. Yes, he's a short man, David Warner. So even though it hit him the top of the roll, and perhaps, yes, it's umpire's call, so they saved their review.
Well, it was a decent review, I thought, Vineet. In the ultimate analysis, it wasn't a nick onto the pad, but certainly hit him in front of the stumps, and that's why I thought it was a decent review. आजकल ये स्पष्ट कर दिया गया है आईसीसी द्वारा, अगर आधी गेंद टच हो रही है तो अंपायर्स के निर्णय को बदला नहीं जाएगा। अभी तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई है कि अनुमान सही लगाया जा सके आधी गेंद पर। जब और विकसित हो जाएगी तो निर्णय अंपायर्स का बदला जा सकेगा। Who can forget that game between South Africa and Pakistan? My goodness me, when he was wrapped in the pad, Shamsi, here goes Willie, comes in and bowls, it gets some movement and passes man at point, runs down to Adil Rashid, who's fielding a third man. Good bit of fielding over there. It restricts the scoring to 1. So just the 2 runs and 4 deliveries so far. 28 for 1 then are Australia, Smith on 5, Warner on 9, and England have made a good fist of it so far in terms of their bowling effort. हाँ, ठीक बात है। 28 रन 1 विकेट पर अच्छी शुरुआत की है। इंग्लैंड दबाव बना के रख रखा है दोनों छोर पर, और निश्चित रूप से वो जैसे तैसे करके इस मैच को जीतना ही चाहते हैं। One slip in place, Smith on strike, Willie outside the off stump, drives and a very good stop, tumbling away to his right at point and prevents any runs being taken. We have obviously Ben Stokes there, he's their talisman, hasn't really fired in the tournament. And I have a question for you, Vineet, which I'll ask you, that is it worthwhile bringing a half-fit player to a World Cup? However good he might be, Ben Stokes, he can't bowl, so he's only going to bat, but does it make sense? What you're saying is that even as a half-fit batter, you're better than the other batters who are available in England. To my mind, that is not the right call. Here goes the last ball of the 5th over, comes in, once again played off his pads, down to 5 leg. How does Steve Smith do this? I will not know. Nobody will ever know. Walking right across the stumps, down to 5 leg for 4. तो इस तरह से ये 5वां ओवर समाप्त हो गया है, और एक और सनसनीखेज मुकाबला चल रहा है जहां न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो मैच जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन न्यूजीलैंड ने काफी रन बना लिया है। ले चलते हैं आपको लाइव कमेंट्री के लिए मैदान पर। धन्यवाद विनीत गर्ग और सुनील गुप्ता। और हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हम बता दें कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जा रहा है, इस विश्व कप का 35वां मुकाबला आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, और इस समय पहले बल्लेबाजी चल रही है न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है 368 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का 48वां ओवर चल रहा है और गेंदबाजी कर रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी बाएं हाथ से ओवर द विकेट एनसीए एंड की ओर से। फिलिप्स उनके सामने, और इस बार स्विंग किया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर लिया गया है, इसलिए ज्यादा मौका नहीं है, ज्यादा रन नहीं मिल पाएंगे, केवल एक ही रन मिलेगा। फिलिप्स पहुंचे 31 पर, सेंटर खेल रहे हैं 7 पर, और न्यूजीलैंड 369 5 विकेट पर। शाहिनशाह अफरीदी, ये उनका 9वां ओवर है। आज 6 बॉलर से बॉलिंग कराई, लेकिन कुछ खास प्रभाव कोई भी गेंदबाज नहीं छोड़ पाया। निरंतर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, और अब अंतिम ओवर चल रहे हैं। देखना है टारगेट कहां तक पहुंच पाता है। हालांकि एक अच्छी खासी रन संख्या जरूर हासिल कर ली है। अफरीदी की गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ जगह पर खड़े होकर पंच किया था, लेकिन फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए अफरीदी ने गेंद को फील्ड किया और वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क की तरफ। बल्लेबाज आउट में है। आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी शुरुआत से ही की गई। पहले विकेट के लिए 68 रन डेवन कॉनवे और रविंद्र ने जोड़े। उसके बाद केन विलियमसन ने शानदार 95 रन बनाए, और रचिन ने अपना शतक पूरा किया इस विश्व कप में। अफरीदी की गेंद पटकी हुई, पुल किया गेंद को 2 फील्डर के बीच से, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। अपने बाईं तरफ जाते हुए सऊद शकील ने गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन मिल पाया। गेंद की लंबाई को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। फिलिप्स खेलेंगे 31 पर, जो सामना करेंगे अफरीदी की अंतिम बॉल का 48वें ओवर की। और न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 370 रन। 367 रन इस विश्व कप में इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर था, जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान जीत किया था। और आज पाकिस्तान के विरुद्ध अभी तक 370 रन बन चुके हैं, जो न्यूजीलैंड ने बनाए हैं। अफरीदी इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ फुल टॉस गेंद
मिड ऑन का फील्डर कैच ले पाएगा या नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। जितनी तेज गेंद, यॉर्कर की कोशिश, लेकिन गेंद की लंबाई को थोड़ा सा ज्यादा रख बैठे। बल्लेबाज ने कोई गलती नहीं की, गेंद को बिल्कुल मिडिल किया और मिड ऑन का फील्डर हालांकि लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर था, पर वो केवल गेंद को देखते बन रहे, ज्यादा ऊंचाई नहीं, लेकिन जितनी दूरी तय करना थी उतनी दूरी मिली और गेंद बाउंड्री के बाहर गई 6 रनों के लिए। तो 48 ओवर 5 विकेट पर 376 रन के अंतिम 2 ओवर के लिए आपको मैं जोड़ूंगा दर्शकों के साथ, इस श्रोताओं के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। Thank you, Damodar. And it almost seems like a script, isn't it, in this inning so far? So many overs we've seen. First 3 or 4 overs. 1 or 2 runs and getting tonked. Thank you, Damodar. 5 and 6. Here's Wasim this time, and that's lofted over the bowler's head. Another grand 6. This time it's Mitchell Santner. If Glenn Phillips finished the last over with a 6, Mitchell Santner says, Glenn, I'll do better. I'll start this over with a 6. This is what New Zealand need at this stage. They were going at around 7.8 and over. The last 3 overs, Pakistan managed to hold on to them to around that 8 runs and over. Whereas New Zealand wanted to reel off at about 12 to 14 and over. This over has started well. Wasim this time to Santner, swung him down. He's found the gap between mid-wicket and wide mid-on, and they go across for a run. That run will take Santner up to 15, and Mohammad Wasim shaking his head. He's been better amongst all the other Pakistani bowlers we've seen so far. Australia is 38 for 2. Meanwhile at Ahmedabad, 383 for 5, close to 8 runs and over. They'll certainly want to go beyond 400. Will the New Zealanders? Glenn Phillips, 37 of 22. What a cameo he's played. This time Wasim to Glenn Phillips. He's hammered it away past extra cover for 4. Rank bad ball. Short in length, outside the off stump. That's not how we bowl at this stage of the innings. And sure enough, Glenn Phillips had enough room, got after it, enough time, hammered it away off the back foot, down to extra cover for 4. And usually had enough room inching towards that 400. Surely enough. 4 more to Glenn Phillips. What a hand he's playing over here in giving this New Zealand innings a great ending. Here is Wasim. Tries to hit the tam lines and manages to do that. Wide of off stump. Just close to the tram lines. A good ball by way of variation there. 11 runs in the first 3 deliveries. Glenn Phillips 41 of 24. Santner's 15 of 12. And they've started this over belligerently with a 6 and a 4. 387 for 5. Wasim this time to Glenn Phillips. Too far outside the off stump. That's a wide. Trying to repeat his previous delivery. He was successful then. Wasim this time to Glenn Phillips. Too far outside the off stump. That's a wide. Get that into a dot ball this time. Concedes a wide. 388 for 5. 8 deliveries left. 12 runs to get to that magical 400. Yes, Chinnaswamy is a ground where many runs are scored. Big totals are chased. Short boundaries. Having said that, 400 is a daunting total. Cleaned him up. The next delivery from Wasim. Glenn Phillips going after it. That's what's expected of him. Played all over that one. That ball checked back from Wasim. And clean bowled. 41, but he's played a good hand over here. Just the 7 deliveries left. In fact, that ricocheted off his pads onto the stumps. That was a Yorker leg delivery. The 7 deliveries left. In fact, that ricocheted off his pads. Didn't make contact. Beaten by the pace of Mohammad Wasim. And bowled by Wasim for 41 of 25. And now 7 deliveries left. They should be able to get to that 400. Damodar. बिल्कुल, और जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी 350 से ज्यादा रन, लेकिन
न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी की है और यदि विश्व क्रिकेट में देखा जाए तो इंग्लैंड ने 498 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे बड़ा स्कोर है। नीदरलैंड के विरुद्ध एमस्टर व्हील में 17 जून 2022 को। उसके बाद पाकिस्तान का स्कोर देखें तो 399 रन बना 1 विकेट पर और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर है नीदरलैंड के विरुद्ध एमस्टर व्हील में 17 जून 2022 को है। उसके बाद पाकिस्तान का स्कोर देखें तो 399 रन बना 1 विकेट पर और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर जो 393 रन है वर्ल्ड कप में, वो रिकॉर्ड उन्होंने पार कर लिया है। यानी 300 वो रिकॉर्ड पार करने के नजदीक हैं। वर्ल्ड कप में 393 6 विकेट, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट टोटल है। Wasim for the last time is over, 2-man Tom Latham, who has played it round the corner, rolls his wrist on that one to a sharp lifting delivery, like a dribble or a single, ends that over with a single at the end of 49 overs. New Zealand 389 for 6. It will be Shaheen Afridi to send down the last over. None for 78 of 9 overs. As we keep saying, except for Mohammad Wasim, who's bowled around 6 runs to the over, all the other Pakistani bowlers have gone at over 6.5. And Afridi 8.67, Hassan Ali 8.2, Iftikhar 6.88, Rauf 8.5. That's the story. Shaheen Afridi, first ball of the last over, and cheekily wants to play the scoop. Does Santner, ends up playing it straight to long leg, just a single, and that single will take New Zealand into the 390s, 390 for 6. Can they get 10 of the remaining 5 deliveries? That's the question. As we keep saying, this is a ground where you can chase down big totals, but 400 will be daunting for any side on any ground. There will be scoreboard pressure. 390 by itself is huge scoreboard pressure. 400, that psychological edge. Here is Shaheen Afridi this time to Mitchell Santner, and takes a big heave at it at Santner. Doesn't make contact, and a dot ball in the bargain. Now from Pakistan's perspective, can Afridi end well? 390, as I said, is already a daunting target enough. But if they can keep them to under 400, there'll be some psychological advantage when they go back to their dressing rooms. New Zealand want to cross that 400. Here is Afridi to Santner, and Santner lofts him hard and high. The ball is in there. Will it fall in no man's land? Yes, it does. They go through for one and they take the second as well. And with that, New Zealand now 392 for 6. Afridi a little bit distraught. Remember, he always likes to be amongst the wickets, and that's the reason why he feels that that catch could have been taken. But I just suspect there was no real chance for that on-rushing fielder from long on to make a catch of it. He made a good attempt but fell in no man's land. Afridi still wicketless, none for 81, but just the 3 runs conceded in the 50th over. Santner facing up to him, 3 deliveries left. Afridi to Santner, and Santner's not from high. This time he's cut the distance, has he? Yes, he has. 6 runs. Magnificent 6. Can you believe it? Mitchell Santner gets right underneath that attempted yorker from Afridi. Afridi just missing his length by inches. This is a game of margins, and Santner getting right under that and tonking it over long off for 6. 82 meters 6, 398. Here is Santner clubbing the next one. One bounce down to orthodox wicket. They go through for one. They take the second. 400 on board. 400 for 6 New Zealand. What a total this will be for Pakistan to chase down. Not just daunting, but hugely daunting. On any ground this will be, including Chinnaswamy, where we know big totals can be chased. Brilliant display of batting here by New Zealanders. 400 for 6.
Just the one delivery left. Afridi this time to Santner. And Santner has clubbed it away down to mid-off inside the 30 yard. Go through for one. And New Zealand end 50 overs at 401 for 6. And 8.02. Pakistan will chase 402 when they come into bat. Meanwhile, Australia are 39 for 2. We take you back to live action to Vineet Garg and Sunil Gupta who are waiting there at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. धन्यवाद के स्वागत है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मैं विनीत गर्ग आपका पुनः अभिवादन करता हूं। अपने साथी कमेंटेटर सुनील गुप्ता, स्कोरर स्टैटिस्टिशियन किशोर लावने और तुषार त्रिवेदी की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। जब हम गए थे तब स्थिति ये थी कि 32 रन बने थे, 5 ओवर स्मिथ और वार्नर 9-9 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद से वार्नर आउट हो चुके हैं। इस समय वोक्स बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को कलाइयों के सारे धीरे से पुश भर कर दिया और इंग्लैंड का
है।